Hello friends, good evening all. This is me, Dr. Kaulas. I am a practicing veterinary surgeon under Government of Odisha. Like in previous video, we have discussed about the poverty, about the unemployment, the important basic concept of both these, and the Gini coefficient, Lorentz curve, the Philip curve, all the things we have discussed. Today, what I have thought I should made a video on the idea of the national income. Because I find it is more relevant for the examinations perspective view, especially when the Opsc pre-examination is concerned. Every year, 1 to 2 questions is being asked by the examinations from this chapter. So let's discuss actually what is the main idea behind the calculations or behind the estimation of national income. So before going to the national income, first we should discuss what is actually income. So dear friends, I am जानी income जो तरह हमें गुड माइंड को आउसी एट गोटे लेमैन कॉन्सेप्ट बोथ रिच पीपल एज वेल एज दी लेमैन दे आर यूजिंग दिस टर्म इनकम राइट. तो ये इनकम कॉन्सेप्टटा ये इनकम वर्ड जो रेलिवेंट है विथ रेस्पेक्ट टू दी नेशन जो नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट आसला से आम इनकम वर्ड तो बेसी हाइलाइट कले जो आम जानी जो 90s रे राइट 90s वाशिंगटन कन्सेंसस होता आप जानी तो जानी था तो वाशिंगटन कन्सेंसस है से ए वर्ड न्यू लिबरलिज्म हैज केम इनटू द लाइमलाइट राइट. जो आम देश से 1992 रे एलपीजी रिफॉर्म्स आनिला लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन राइट. ये सब जिन आनला भी से भी आम यूएनडीपी during that time, especially during the year 90s रे से UNDP से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कॉन्सेप्ट को से आनला. यही कॉन्सेप्ट जितने से आनला से देश मान को कैटेगराइजेशन कला सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर कैटेगराइजेशन कला. सो तीनटा जिनस इनकम एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी राइट. सो से गोटे इनकम वर्ड टाक से आम मोर प्रायोरिटीज से टाइम रे हमें दिगला. देखिए तो इनकम वर्डटा मैंने कौन ना आप केते आय कर सिंपल मीनिंग गला केते आय कर राइट. जो गोटे इंडिविजुअल इनकम कि गोटे ग्रुप ऑफ पीपल इनकम एवरेज एटा कैलकुलेशन करवाटा वेरी इजी. जिते बड़े आम इनकम वर्डटा को देश सहित इंटीग्रेट करदे और व्हेन वी आर calculating the income of the whole population of our country or the total income of our country, then the word itself national income come right. So national income कौन करागला ताकू इकोनॉमिस्ट माने ताकू याको कैलकुलेट करया पे 4 डिफरेंट पिलर्स को 4 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से ताकू यूज कले राइट. नेशनल इनकम को एस्टिमेट करया पे व्हाट आर द इनकम व्हाट आर द 4 पिलर्स. फर्स्ट वन इज जीडीपी एनडीपी जीएनपी एंड एनएनपी राइट. we'll deal with every term very vividly as well as for the what is the main question, what is the questions may be asked from this part also right. जब आम देखिए जीडीपी कॉन्सेप्ट आसवा सो नेशनल इनकम तो आसवा गोटे पर गोटे वर्ड्स को आम देखा 4टा वर्ड्स को देखा. सो नेशनल इनकम जो आम कहते गोटे होल कंट्री आम इनकम को कैलकुलेट करवा नेशनल इनकम ताको कहया. सो ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट किए करूँ राइट. आम जमती स्कूल लेवल रे सार हमको टैक्स देले कि तुम मैथमेटिक्स करी आनियो तो कैलकुलेशन किए करियो स्टूडेंट करियो राइट. सेमती नेशनल इनकम को कैलकुलेट करे सीएसओ एटा गोटे वर्ष ऑफिस रे पड़ितला लाइक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस राइट. सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रो गोटे डिवीजन अच्छी राइट. गोटे डिवीजन अच्छी जमती ता नाला मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस.
ए डिवीजनटा सी नेशनल इनकम को एस्टिमेट करे एंड सबमिट्स इट्स फाइनल रिपोर्ट टू द सीएसओ ऑफिस राइट सीएसओ ऑफिस रो हेडक्वार्टर अच्छी एट न्यू दिल्ली it was established on 1950 right so national income तो आमे केमती है धर आमे जेंती इंडिविजुअल माने कोन मासु इनकम करछे कैलकुलेट करछे वर्षिक इनकम कैलकुलेट करछे लाइक सेंती आम देश रे त आमे नेशनल इनकम कैलकुलेट करिया सेंती आमे जनरली वन फाइनेंशियल ईयर को आमे कैलकुलेशन करंती पाई कैलकुलेशन करा जाय गोटे अर्थनैतिक वर्ष जब कह ओडिया सो वन फाइनेंशियल ईयर ता कोटू कह जाए ए डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर रो जो अवधि रहबो जो लेंथ रहबो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द फाइनेंस वन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April to 31st March of the next year right for Reserve Bank of India okay for Reserve Bank of India this starts for 1st July to 31st of June right like for IMF for IMF पाई सी कहूँ फॉर 1st June to 31st of May so the financial year is its length or its duration is different for different organization for government of India it is from 1st April to 31st March and for RBI it is 1st July to 31st June and for International Monetary Fund it is IMF it is for 1st June to 31st of May right the whole it is released the data is released by the Central Statistical Office and by its a special wing it's known as the Ministry of Statistics as well as and program implementations right so using the four method the GDP NDP GNP and the NNP we calculate the national income so first we will see what is actually the GDP is if we extend I mean elaborate करे वर्ड को ता ना आला ग्रॉस आप लिखो दो साइड बाय साइड देखो देखले किछ लाभ नै ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मु डेफिनेशन सब बोर लिखाई छी मु जस्ट ताको एनालाइज कर दी ग्रॉस मींस हला टोटल डोमेस्टिक मींस हला डोमेस्टिक माने आभ्यंतरीण मींस the term itself signifies the economic activities जहाँ वाणिज्य व्यापार कले जहाँ भी economic related activities कले within the very important within the boundary of a nation and product net gross domestic product it is the final goods and services at the end of each financial year right so I mean बर्तन आप आराम से करि परिबे एटा definition so the total amount of goods and services produced at the end of the financial year in within the boundary of a nation is known as your GDP right so GDP gross domestic product so GDP is first so GDP first so gross domestic product आमे GDP रू we can calculate the growth of a nation right केमती आमे कहउछन्ते आम देश ए वर्ष 7% जीडीपी ग्रोथ कला आमे कहबा नेक्स्ट वर्ष आम देश 7.3% ग्रोथ कला राइट माने कोन सपोज एग्जांपल 2019 रे आम देश सपोज 100 टका इनकम कला और 100 टका सा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रो इनकम कला 2020 रे
तार वैल्यू हो गला 2000 सॉरी 107 टका हो गला सपोज इनकम कला तो नेट ग्रोथ केते हला 7%। तो आमे कहबा आम देश 7% ग्रोथ रेट अचीव करूची राइट। इट इज ए क्वांटिटेटिव टर्म आमे क्वांटिफाई करूचे द अमाउंट ताको आमे क्वांटिफाई करूचे राइट। इट डिनोट्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन राइट। आमे धर गोटे देश जति की तार जीडीपी अधिक आमे जानते से देशटा सेति इकोनॉमिकली सेति स्टेबल सेति स्ट्रांग आमे वर्तमान को आवर इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी माने इन टर्म्स ऑफ योर इट इज कैलकुलेटेड बेसिंग अपॉन योर जीडीपी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग योर एनडीपी राइट। एनडीपी माने हैला सपोज आमे गोटे जिंस सपोज एग्जांपल एडा हम देश सपोज एठी गोटे कार मैन्युफैक्चरिंग हैला राइट। कार रो वैल्यू ला सपोज 10 लाख रुपीस राइट। ए 10 लाख रुपीस 2020 रे अछि 10 लाख रुपीस सपोज 2021 रे यार वैल्यू 10 लाख रुपीस रहिबो की ना काहे कि ना कार सेल वैल्यू कमी जाउची कार मूव करूची तार ट्यूब टायर तार कलर छाडुची तार लॉन्जिविटी कमी जाउची जोटा को हमें लेमन कांसेप्ट कहंती वेयर एंड टियर क्षय होउची सेटा को हमें इकोनॉमिक वर्ड से देखिबा ताकू कहंती डेप्रिसिएशन। आज गोटे आप घर तैयारी करूछंती घरटा आज जति कॉस्ट आपण तैयारी करछंती 5 वर्ष पर बिकिबे ता घर निश्चय दाम कमी जिवो काहे कि घरर जते ब्रिक्स लागु सेते सीमेंट लागु सबुतर वैल्यू कमुची घरटा जति स्ट्रांग रहबा कथा दिन को दिन घरर स्ट्रेंथ कमी आसीबो दैट्स व्हाई द फाइनल सेल वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस राइट विथ द ऑनगोइंग ऑफ द इयर्स सेटा कहउछंती डेप्रिसिएशन। आम देश जहाँ भी जीडीपी इनकम कला जहाँ भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस प्रोड्यूस कर गुड इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना जहाँ गुड विदिन ए नेशंस बाउंड्री से आम जदि डेप्रिसिएशन वैल्यू काटिदेवा से गुड्स एंड सर्विस डेप्रिसिएशन वैल्यू काटिदेवा तेणु किसी जिन किसी काटिदेवा किसी जिन नेट आसो सीटा कहते नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी राइट सेटा को आम कहते एनडीपी right। So NDP dagu it is a just when we are subtracting the when we are subtracting depreciation from the GDP we are getting the NDP right। Next we will see what is the GNP gross national product। so gross national product माने हैला gross माने total national माने कोन एडी national माने इंडिया national नो हैला हम कहबी सेटा product means हैला final goods and services at the end of the each financial year। here national means nationals जो हमर citizens माने रहउछंती राइट तांकर total income केते गोटे इंडियन नेशनल्स मानकर गोटे फाइनेंशियल ईयर रे जो फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करछन तार वैल्यू केते। सो इंडिया रे लोक माने इंडियन नेशनल्स इंडियन सिटीजन्स इंडिया रे नेशनल्स माने खाली तो इंडिया रे कन्फाइंड कि नांती अमेरिका रे अछंती यूरोप रे अछंती अफ्रीकन रे अछंती जापान रे अछंती चाइना रे अछंती सो दे आर अब्रॉड प्रेजेंट इन अब्रॉड ओके। सो से माने सेतर इनकम करूछंती एटाला इंडिया चाइना रे अछंती यूएस रे अछंती जापान रे अछंती लाइक सेन सब जगह रे अछंती त समस्त कर इनकम करी किना कोन इंडिया को पठौछंती राइट प्लस इंडिया रे किसी प्रोडक्शन होउची राइट सेटा कहउछंती हमर जदर हम टोटल तक हम हिसाब कर दोछंती ताको कहउछंती हमर कोन जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
टोटल नेशनल वन केते से इनकम करूची तो डेफिनेशन दे लिखा जीएनपी रो वैल्यू कौन हम जीडीपी जहाँ आवर कंट्री भितर प्रोडक्शन है प्लस नेट इनकम फ्रॉम आउटसाइड राइट जो हमको नेट इनकम फ्रॉम द आउटसाइड इनकम कि बाहर आस खाली तो लोक मैंने तो दौना इनकम हमको दौना आबर अलग सोर्स रे भी इनकम सपोज सपोज गोटे एग्जांपल देली इंडिया लोन देला सपोज श्रीलंका को 100 टंका लोन देला केते परसेंट रे सपोज 7% देला आफ्टर 1 ईयर ये केते परसेंट दबो ये केते तक रिटर्न करिवो 107 रिटर्न करिवो राइट एटा हला से देला इंडिया नेला सपोज आफ्रिका अछि आफ्रिका कौन गला इंडिया को लोन देला सपोज ये ताको देला सपोज 100 टंका देला 4% देला इंडिया ताको केते वापस करिवो 104 टंका फेरेबो एट द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर सो एई जगह इंडिया इनकम केते हला 100 टंका देला 107 टंका पाइला ये 7 टंका देला एई जगह से कोन 100 टंका नेला 104 टंका देला -4 एटा +7 ना -4 राइट तो एई जगह नेट इनकम हला 7 टंका एई जगह नेट इनकम हला हाथ गला -4 टंका तो नेट इनकम केते हला 3 टंका लाइक सेटा सेमिति नेट इनकम राइट आउ गोटे इनकम कोड अच्छी जो फॉरेन नेशनल्स मैंने इंडिया को पैसा पठाऊँ जो फॉरेन जो इंडियन नेशनल्स मैंने जो इंडिया को पैसा पठाऊँ रिलेटिव्स मैंने अच्छे सपोज मुझे अमेरिका चाकरी कली मो बापा माँ तो इंडिया अच्छा सब्सिस्टेंस बचे भी पैसा दरकार घर चलने पैसा दरकार तो मुझे इंडिया को यूएसए डॉलर पठेली से प्रोसेसटा कहते रेमिटेंस प्राइवेट रेमिटेंस जो देखाई कि इंडिया जनरली दी साउथ इंडियन पीपुल से माने कौन करे से गल्फ कंट्री रे ड्यूरिंग द 70s 80s टाइम रे बहुत जगह से काम करते लाइक से देखाई इंडिया गॉट ए ह्यूज इनफ्लक्स ऑफ प्राइवेट रेमिटेंस फ्रॉम द गल्फ कंट्री माने मेडिटेरियन रीजन जो सीरिया लिबिया जो आपनकर ईरान इराक ये सब कंट्री गुड़ाक अच्छी जिते आप आरब स्प्रिंग चलला गल्फ वार चलला से कौन इंडियंस मान रेस्ट्रिक्शन करागला कि इंडियन मैंने गले देखा जाए किसी दिन पर प्राइवेट रेमिटेंस कमी कमी आसला स्टिल इंडिया इज द हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ द प्राइवेट रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर इंडिया चाइना इज देयर ओके एमिति नेट इनकम को हमें एमिति करंती सो नेट इनकम को थ्रू गोटे प्राइवेट रेमिटेंस गोटे कौन कहली जो इंटरेस्ट है लेंडिंग बोरोइंग प्रोसेस आ गोटे जिनस अच्छी सपोज आम इंडिया रू सपोज धर मिल्क बाहर देश को रप्तानी करुच्ची एक्सपोर्ट करुच्ची धर ए वर्ष आम 200 टंका एक्सपोर्ट कले राइट आम सीना मिल्क एक्सपोर्ट कले सपोज आम देश में एसेंशियल मेडिसिन ना आम कौन कले चाइना रू आम एसेंशियल मेडिसिन इंपोर्ट कले आम मिल्क देले ना इंपोर्ट कले सपोज 150 टंकार आम मेडिसिन इंपोर्ट कले सो आम देश नेट फायदा केते 150 आम इनकम कले सॉरी हाँ आम मिल्क देले गोटे देश को तो सी आमको पैसा देला एक्सपोर्ट करके आम किसी पैसा आनी पकेले लाइक आम इंपोर्ट कले 150 टंका माने कौन आम तो 150 टंका देले तो आम पाइले एथिरे केते टंका 200 टंका 150 टंका दे देले तो नेट केते हला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते 200 देले 100 पाइले तो 150 गला आ 50 टंका हमर नेट रहिला सो सेटा कोन देश भीतर रहिला विद इन द इंडिया रहिला सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ सेटा को हमें इन नेट इनकम रे पकई परिया राइट सो नेट इनकम जत आउची डेफिनेशन लिखिया बर्तन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कौन कहली आमर जहाँ जीडीपी रहिला राइट
आमर जा जीडीपी रहिला आमर जहाँ जीडीपी रहिला प्लस आमे केते एक्सपोर्ट कले आमर टोटल नेट इनकम रहिला राइट नेट इनकम माने कौन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से आइदर प्राइवेट रेमिटेंस हो कि लैंडिंग बोरोइंग हो किंबा आमर जो कहली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी हो सो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट राइट कंडीशन 1 जिते बड़ा इनकम एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट हो गला ए वैल्यू केते हो ए दर समान हो माने ए वैल्यू 0 हो तेणु कौन है जीडीपी इक्वल टू जीएनपी और जीएनपी इक्वल टू जीडीपी फर्स्ट सेकेंड केस रे जदि हमर एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ी जाउची ओवर इंपोर्ट वैल्यू आ तो बेसी पैसा पाउचे तो एथरे किछि गोटे प्लस पॉजिटिव साइन रहइबो एठी तो ए वैल्यूटा जहाल भी जीएनपी वैल्यू तो बड़ हबो राइट सो जीएनपी is greater than GDP right third criterion when export is lesser than income हम हाथ बेसी पड़ोची तो किछि पयला माने माइनस रहइबो तो जीडीपी रो सेटा कोन माइनस वैल्यू डा हो तो फाइनल आसले वाला को जीडीपी टा बड़ हो एट दैट टाइम जीएनपी is lesser than GDP right so this is the main three conditions in order to calculate the GNP process. Next is your net national product. Net national product. So net माने कौन किसी सब्सट्रैक्शन करे जो लाभ क्षति आमर कौन केते लाभ होला माने कौन केते इन्वेस्ट कले टोटल केते इनकम करथिले केते इन्वेस्ट करथिले तो काटी द केते लाभ सेमती नेट नेशनल प्रोडक्ट यार डेफिनेशन है आमर जहाँ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रहा जहाँ आम इनकम कले से जब डेप्रिसिएशन सब्सट्रैक्शन करदे देन आम ऑटोमेटिकली कौन नेट नेशनल प्रोडक्ट पाई जीवा राइट ये नेट नेशनल ऑब्जेक्टिव पड़े ये नेट नेशनल को यूज करिकी आमे पर कैपिटा इनकम बाहर करे गोटे लोकर पर कैपिटा इनकम देश रे केते हैला किंती बाहर करे जो जतकी यार वैल्यू आसीबो नेट नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन एग्जाम रे पड़े ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री व्हिच टर्म इज प्लेस्ड एट द डिनोमिनेटर इट इज द एनएनपी and this NNP is the is used for a calculation of the per capita income right so these are the four formula you have to remember again गोटे क्वेश्चन को जी आम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करूचे पैसा हिसाब करूचे राइट पैसा तार हिसाब करूचे गोटे बेस ईयर कॉन्सेप्ट अच्छी बेस ईयर माने हला सपोज आम जो पेपर पढ़ते 2012 को बेस ईयर निया गला राइट माने गोटे कांस्टेंट ईयर को फिक्स करा गला पर 2012 जहाँ प्राइस थिला आम एज्यूम करिया 2020 भी सी प्राइस थिबो एटा गोटे प्रकार बेस ईयर रे गोटे कांस्टेंट प्राइस जोरा जोरा को बेस ईयर कहंदी को आम यूज कर आ गोटे था करेन्ट प्राइस माने 2012 जो रेट थी 2020 से रेट न सपोज ये आप अंडाटा 5 से अंडाटा 3 टका किणुले एवं यहाँ 6 टका लेखा है कौन करेन्ट प्राइस 6 कि से टाइम रे कौन 3 सो करेन्ट प्राइस देखते एमआरपी देखते लिखा होती गुड्स ऊपर लिखा होती किसी पैकेट्स ऊपर लिखा होती जानवे सेटा करेन्ट प्राइस को सेटा डिफाइन करूची जनरली बेस ईयर को यूज करके आम नेशनल इनकम कैलकुलेट करूँ अनदर थिंग इज देयर आम आ गोटे अच्छी 3टा जिनस को लेकिन
थ्री इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स को लेकिन आम भी ताको नेशनल इनकम कैलकुलेशन करूँ। फर्स्ट इज योर इनकम मेथड, एटा जस्ट दरकार नहीं किसी कि आप जानी था इनकम मेथड, कंजप्शन मेथड आ गोटे है आपंकर प्रोडक्शन मेथड। यूजिंग थ्री मेथड्स वी आर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। इनकम मेथड कौन लोक मैंने केते इनकम कले राइट सेटा भी नेशनल इनकम रे कैलकुलेशन हो। कंजप्शन केते कंजप्शन कले केते खाइले केते फूड आर्टिकल्स कंजप्शन कले केते नॉन फूड आर्टिकल्स और एक्सपेंडिचर मेथड तो कहते केते एक्सपेंडिचर कले से हिसाब आ प्रोडक्शन केते विद इन देयर कंट्री केते प्रोड्यूस होला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज राइट। जनरली आम इंडिया रे कौन करा जाए इनकम आ प्रोडक्शन को बेसी प्रायोरिटी दिया जाए मोस्टली इनकम एंड परीक्षा पड़े इनकम एंड प्रोडक्शन मेथड्स आर being used to calculate the national income of our country right। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सो नेशनल इनकम कैलकुलेशन करे सीएसओ। सो ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंट टाइम 1869 मसीह ददा भाई नरोजी जी आम देश फास्ट नेशनल इनकम कैलकुलेट करते राइट। तांकर से बही थिला गोटे बुक से एग्जाम रे बहुत टाइम पड़े पॉवर्टी एंड ब्रिटिश ऑन रूल इन इंडिया। सो बट दिस इज ब्रिटिश रूल्स नॉट ऑन रूल ब्रिटिश रूल इन इंडिया एटा से लिखी थी। आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट नेशनल इनकम वाज कैलकुलेटेड बाय पीसी महालानोबिस इंपोर्टेंट आर्किटेक्ट सेकेंड फाइबर प्लांट तांकर इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थिला तो सेकेंड फाइबर प्लांट कहते जनरली दि महालानोबिस मॉडल। सी भी जी इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को एस्टाब्लिश करते कोलकाता रे हला पीसी महालानोबिस ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ इन द कैलकुलेशन द मॉडर्न कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया राइट। सो आ गोटे दुटा कॉन्सेप्ट मु कहि दउची another thing a concept a term is there demonstration effect टा कोड देखा जाए इफेक्ट माने कोन कोड किछ प्रभाव डिमोन्स्ट्रेशन माने देखेबा जोड़ा प्रभाव लोअर सेक्ट ऑफ द सोसाइटी और द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी विपिन देखा जाए गरीब लोक मान देखा जाए एमाने कौन करती ये गरीब लोक मैंने हायर क्लास लोकंकर लाइफस्टाइल एक्सपेंडिचर पैटर्न एक्स्ट्रा वैकेंट लाइफ को से माने फॉलो करती फॉलो करी कहते से जिनसा को मैंने निज पाखे अप्लाई करती। फॉर एग्जांपल मुझे सपोज गरीब लोक मोर मासिक इनकम है सपोज 200 टंका मुझे फॉलो कली मिस्टर एक्स को जार मासिक इनकम n टाइम्स मोर देन मी मु सब पैटर्न को फॉलो कली राइट। पैटर्न फॉलो कले मु टोटाल 200 टंका जाक से खर्च रे यूटिलाइज कली नो सेविंग this is known as your demonstration effect। आउट अच्छी दैट इज नोन एंगल्स लॉ। एंगल्स लॉ कहूँ जिते बड़े गोटे गरीब लोकर व्हेन द इनकम ऑफ ए पुअर गोटे गरीब लोकर तार इनकम बढ़ी जाए से लॉ अनुसार द एक्सपेंडिचर और द कंजप्शन on non-food articles increases right। से कहूँ जिते पुअर लोक मान एक्सपेंडिचर when the poor people इनकम बढ़ी जाउची से नॉन फूड आर्टिकल्स
ऊपर तांकर एक्सपेंडिचर बेसी होउची अल्प पैसा पाथो तुम तार मेन बंचे कोन दरकार खाद्य वस्त्र बासगृह मुख्य खाद्य कम इनकम माने से he will divert his fund or his income more towards the food articles बेसी बेसी पैसा इनकम करो नॉन फूड आर्टिकल्स टीवी किनियो गाड़ी किनियो like this. So this is known as your Engel's law. When the income of poor increases substantially, it tries to expend or try to consume or try to spend the whole income towards the consumption of the or towards the expenditure of the non-food articles. This is known as your Engel's law. Right? So dear friends, I hope I have completed A to Z concept in this aspect, and if I have left something in this video, please do have a reminder to me in my comment box. हसे आडू कोइ नेशनल इनकम इन ग्रोस रो फॉर्मूला है क्या मन रखिथांदु C plus I plus G plus E minus X minus M formula मन रखिथांदु नेशनल इनकम C stands for total consumption केते वैल्यू प्लस केते इनकम करची प्लस G रहला गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर वेलफेयर स्कीम्स ए एरिया केते से एक्सपेंडिचर करची गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर X मींस हला इट इज द एक्सपोर्ट it is the import. So the consumption, investment, income, it is the government's expenditures, it is X bracket X export minus import. So this is the formula for the calculating the national income. So dear friends, jatki parichi I have tried to complete in this part the idea of the national income. So thank you Mr. Mahalanovis, who have actually give us a step how to calculate the national income. So dear friends, if you have truly like my video, please do it like, make this video share, and finally I am requesting you to do subscribe my channel because I have very low numbers of subscriber, right? And please press the bell icon so that when I am uploading a new video regarding the Opsc examination, then you will get an early notification. So dear friend, until the next video, God bless, thank you, good night.